All right. So our next task is to study the Debye theory. All right. So, but as I told you that before starting the Debye theory, we have to discuss one important concept, that is a density of a state. Okay. So today we will discuss regarding the density of states. Density of states. मैं आप लोग को थोड़ा एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो टॉपिक है हमारा, इट्स क्वाइट इम्पोर्टेंट. ठीक है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है. और एज फार एज योर एग्जामिनेशन इज कंसर्न इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग ये टॉपिक आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है. इफ यू टॉक अबाउट द स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, इफ यू टॉक अबाउट द क्वांटम मैकेनिक्स, फॉर द सॉलिड स्टेट फिजिक्स, राइट, वी यू हैव टू यूज density of state concept everywhere, means in every subjects. And very frequently, if you see the previous year paper, very frequently you will get that question from the density of space, density of state has been asked. Okay. So although we will discuss the thorough concept of the one-dimensional, two-dimensional density of state, three-dimensional density of state, but at last, after end of the today's class, I will tell you three important relation of the K space, one for the one dimension, one for the two dimension, and one for the three dimension. All right. As far as your examination is concerned, as far as the question solving is concerned, you have to remember those three relations actually. If you remember those three relation, those three expression, one for each, 1D, 2D, and 3D, you will be able to solve each and every question regarding the density of states. All right. So we are going to start our discussion, and let's see what basically happens here. So topic is density of state. Density of state basically is defined as the number of state per unit energy range. All right. Density of state is defined as number of states per unit energy range. Okay. You all guys know, I'm giving you before going to the one-dimensional case, I'm just giving you example to understand. आप लोग मुझे बताओ, how you write the number density. आप जब इलेक्ट्रॉन नंबर डेंसिटी फाइंड आउट करते हो, आप उसको कैसे लिखते हो? या नंबर डेंसिटी आप किसी भी पार्टिकल की फाइंड आउट करते हो, उसको आप कैसे लिखते हो? नंबर डेंसिटी number density is equals to number of particle, yes sir, divided by the volume if you talk about the three dimension, divided by the area if you talk about the two dimension, and divided by the length if you talk about the one dimension. यही तो करते हैं. Volume slash area for the two dimension slash length for the one dimension. Clear? The concept of density of state is, I'm not saying exactly this, but yeah, resemblance to this. ठीक है, कुछ ऐसा ही है. देखते हैं. I am giving you an example of the bead system. ठीक है, आप देखते चलना, साथ साथ पढ़ते चलो, और आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा ये क्या है. ठीक है, बीड सिस्टम का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, और फिर बीड सिस्टम को डिस्कस करने के बाद मैं इसी को रिलेट कर दूंगा वन डायमेंशनल डेंसिटी ऑफ स्टेट से. ठीक है, बीड सिस्टम. Let's suppose we have a string.
we have a string, means there's a length string whose length is, let's suppose, 100 centimeter. Let's suppose the length is 100 centimeter. Okay, so if this is x direction, so this point is really x is equal to 0, x equal to 0 centimeter, and this point will be x is equal to 100 centimeter. Okay, and let's suppose there's a beads on this string. One bead here, one bead here, one bead here, similarly here, 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 and here. ठीक है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, right? And we assuming that the spacing between the two beads, let's suppose it is 2 centimeter. The spacing between the two beads 2 centimeter, which is constant. मतलब हर एक दो बीट के बीच में जो spacing है वो 2 centimeter है. So now tell me, if I ask you that total number of beads in this string, how will you find? Total number of beads क्या होगा? कितना आएगा? आप लोग की आवाज मुझे क्यों नहीं आ रही? एक मिनट, आप लोग एक बार फिर से बोलना जरा. 100/2. हाँ नहीं वो तो मैं सुन रहा हूँ, बट ये वॉइस बहुत ही स्लो क्यों आ रही है मुझे? मैं आप लोग को ठीक से सुन नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली. आप लोग प्लीज कुछ बोलना, कोई भी. अरे हेलो हेलो ही बोल दो. Hello, sir. अभी ठीक है. नाउ ऑलराइट, सो टोटल नंबर ऑफ बीट विल बी हाउ मच? कितना होगा? 100 divided by 2. Alright, Yes, that sir. is a length divided by the spacing. Alright, that means you can say that it will be total length. एक मिनट, उधर दिख नहीं रहा आप लोगों को. ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ. So the total number of beads this will be equal to, as you said, that is 100 by 2, that is total length, and divided by interval or spacing. यही होगा. That is 100 centimeter divided by 2 centimeter is equals to 50. ठीक है? Is it true? Now if I ask you that what will be the number of beads, what should be the number of beads between a certain region? Okay, if I ask you that what will be the number of beads in a certain region, let's suppose this point is our x point, this is our x point, and here at this point, let's suppose this is our some x plus dx. All right, let's suppose this is our x plus dx. So if I ask you that how many beads will be there between x and x plus dx, what will be the answer? What should be the answer? X plus dx squared is x divided by 2. x plus dx minus x divided by 2. Divided by 2. सब लोग क्लियर हो इस पे? So if I ask you that the number of beads in range
x and x plus dx. As you said, this is equal to x plus dx minus x divided by the interval. All right. So this factor, number of beads in range x and x plus dx, I am writing this as gx dx. ठीक है, ध्यान से समझना. अभी मैं इसी बीड सिस्टम को ना रिलेट कर दूंगा. ठीक है, आप बस ध्यान से देखते चलो. नंबर ऑफ बीड्स इन द रेंज x एंड x प्लस dx, इस रेंज में जितनी भी बीड्स है उसको मैंने किससे नोट किया? gx dx. ऑल राइट, सो इट्स वैल्यू विल बी व्हाट? this minus this by spacing, that is dx by 2. यही होगा. ऑल राइट, व्हाट इज अ dx हियर? मैं इसको एक एक करके सब नाम साइड में लिखता चल रहा हूं. ठीक है, जिससे अभी आपको रिलेट करने में काफी आसानी हो जाएगी. सो व्हाट आई सेड, व्हाट इज gx dx हियर? Number of beads in the range x and x plus dx. All right, what is dx here? dx क्या है यहाँ पर? Length of the interval in which we are finding. dx की बात कर रहा हूँ. इंटरवल तो स्पेसिंग तो आपका ये है 2 सेंटीमीटर. What is x plus dx? This is basically a segment, you can say. ठीक है ना, एक छोटा सा सेगमेंट है और ज्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, this is basically a segment. All right, and obviously the 2 is a spacing. 2 is interval, 2 centimeter is interval और spacing. ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? एक बार आप देख लो, अभी तक किसी को कुछ भी डाउट हो, यू कैन आस्क. ठीक है, अब देखो, नाउ आई एम डिफाइनिंग वन मोर फंक्शन हेयर. आई एम डिफाइनिंग वन मोर फंक्शन हेयर, दिस 2. ठीक है ना, इसको ऐसे लिखा रहने दो. वन मोर फंक्शन हेयर, दैट इज रो x. I am defining one more function here, that is rho x, and it is the rho x is the density of beads. Rho x is the density of beads. Density of beads. All right. So, can anyone tell what should be the expression for rho x? Rho x का expression कैसा होना चाहिए? It should be the number of beads in the range x and x plus dx. ठीक है, number of beads in the range x and x plus dx, that is gx dx divided by what? dx. Good, that is segment length. ठीक है ना? So I am defining here one more function, that is rho x, which is the density of beads. ठीक है, write down here rho x is what? Density of beads. Density of beads. ठीक है, now let's see. एक मिनट में अपनी चौक बदल लूं. ऑल राइट, ये एग्जाम्पल सबको समझ में आया है? किसी को प्रॉब्लम? एनीवन? सिंपल सा. सेगमेंट लेंथ एक बार बताएंगे प्लीज. सेगमेंट dx इज सेगमेंट लेंथ. भाई छोटा सा लेंथ, छोटे से लेंथ में dx लेंथ में कितने नंबर ऑफ बीट्स है, वही तो आपका डेंसिटी हो जाएगा. ठीक है, ऑल राइट. नाउ if you guys have understood this example, then you have understood the density of states. Now I am going to change my space.
space means now I am going in K space. Now I am going in K space. Okay, all right. चलो देखते हैं K space में क्या होगा. Changing my space and moving toward the Fourier space, or you can say K space or momentum space, whatever you want to say. K space. ठीक है? Let's suppose this is our 1D की बात कर रहे हैं, 1 dimension की बात कर रहे हैं. Let's suppose this is Kx. ठीक है? Now, one more thing I want to put here as a disclaimer, that whatever discussion we will do in density of state, ध्यान से सुनना, whatever discussion we will make here in density of state, this will be for the system which have constant potential. I'm repeating again, whatever discussion we will make here, this will be for system which will have the constant potential. Constant potential means there is no effect of the any force on that potential. ठीक है? F dot dr करते हो, ठीक है? That means there is no force, there is no external force for the disturbance. ठीक है? So आप ये bracket में लिख लेना that whatever discussion we are making here is for the constant potential. Is for the constant potential. All right? So now I am taking an example of very famous example of free particles. आप सब लोग familiar हो उससे, आप सब लोग पढ़ भी चुके हो. We are taking an example of free particles. ठीक है ना भाई, ये भी constant potential, zero potential होता है, ठीक है ना. Basically the ultimate aim is कि कोई बाहर से कोई force उसको hamper ना कर रहा हो, ठीक है ना. So I have take the example of free particles. और एक बात ध्यान रखना, जो भी डिस्कशन हम यहाँ करेंगे, जो भी हमारा वैल्यूज आएंगे, जो भी एक्सप्रेशंस आएंगे, वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फ्री पार्टिकल के लिए वैलिड होगा. दैट विल बी वैलिड everywhere where the potential will be constant. ठीक है? चलो. Now, can anyone tell if this is, I'm in a K space now, and this is our Kx axis, all right, and I'm denoting a point here. I will tell you what basically this point denotes. I will tell you in a while. First, tell me, what are the spacing between these points? Basically here, चलो मैं और clear कर देता हूँ. Here all the points, basically all the dot you can say, basically representing a quantum states. All the dots representing here a quantum states. Now tell me, what should be the position, or basically tell me what should be the spacing between these two beats or quantum states. Yes. तो एक डाउट था सर, आपने फ्री पार्टिकल जब मेंशन किया उसके बाद आपने जो कहा उसे रिपीट कर देंगे, मैं थोड़ा I am नेटवर्क saying whatever discussion we will made here, in our discussion of density of state for the 1D, 2D and 3D, it will be valid on the system whose potential is constant. ये मैंने कहा था. Now, what should be the value of kx of this quantum states? क्या होना चाहिए? आप लोग 1D बॉक्स पढ़ चुके हो? क्या होना चाहिए? ए नॉट. अरे नहीं, ए नॉट कहाँ से आ गया? जीरो होगा. कोई और बोल रहा है? नहीं, जीरो नहीं, और कोई बोल रहा है? पाई मोमेंटम. अरे सर, पाई स्क्वायर h स्क्वायर पाई अपॉन ए. exactly pi upon ए. but here I am taking the length L, capital L. पाई अपॉन ए एंड पाई. याद करो आप लोग वो डेरिवेशन, अभी याद आ जाएगा आप लोगों को. जब आप श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हो, मतलब सॉरी, जब आप वेव फंक्शन लिखते हो,
तो मैं को दिखा रहा हूं, आप लोग अभी तुरंत कनेक्ट कर जाओगे. व्हेन यू राइट द वेव फंक्शन ऑफ द पार्टिकल इन 1D बॉक्स, व्हाट यू राइट? अंडर रूट 2 by L Sin n pi x sin upon Under root 2 n upon pi L. pi x upon L. What is n pi upon L here? K. 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 K ही तो होता है. For the different value of Yes, sir. for the different value of n, you get different states. पाते हो? आप के n की जब 1 रखते हो आपको ग्राउंड स्टेट मिल जाता है, 2 रखते हो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मिल जाता है, 3 रखते हो सेकंड एक्साइटेड मिल जाता है. So basically, what is kx here? Kx is pi by L. So what should be this kx? इसका वैल्यू क्या होगा? 2 pi by L. इसका क्या होगा? 3 pi by L, 4 pi by L, and so on, and up to last n pi by L. ठीक है? It will be n pi by L. Now, if I ask that I am taking the range here, I am taking the range here from, let's suppose this is k, and this is k plus dk. ध्यान से सुनना, k to k plus dk. That means this region will be called what? इसको हम किससे डिनोट कर सकते हैं? GX GK DK से gk dk, है ना? अब आप रिलेट करो, बीट से रिलेट करो. मैंने इसे एग्जांपल दिया था बीट्स का. भाई k से लेके k प्लस dk के बीच में कितने क्वांटम स्टेट्स होंगे, वही तो gk dk बताएगा. yes sir. And what should be the value of gk dk here? What should be the value of gk dk here? रिलेट करो ना, बीट सिस्टम से रिलेट करो तुरंत. अभी तक DK by 2. DK by pi by L. dk by DK by 2 कहाँ है? 2 तो वहां स्पेसिंग थी, यहाँ की pi by L. pi by L. Yes, Pi by sir. DK by K by L. dk by pi by L. ठीक है ना? k plus dk minus k divided by the spacing, that is pi by L. And finally, you got a relation of gk dk. gk, I'm writing here. चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ. And finally, we got the relation of gk dk is equals to what? क्या आ जाएगा ये? It will be L DK upon pi. L upon pi dk. यही आएगा, L upon pi dk. gk dk is what? gk dk is the number of state in the range k and k plus dk. अब जितना gx dx आपने लिखा था उसको gk dk में कन्वर्ट करके उसके नीचे आप इसको लिख दो. दैट व्हाट इज gk dk हियर? gk dk इज नंबर ऑफ, वहां बीट्स था, नंबर ऑफ क्वांटम स्टेट्स in the range x, that is k, and x plus dx, that is k plus dk. Understood? And we have divided by the interval, that is pi by a, and we got the gk dk is equals to L upon pi dk. And one more function we have defined, that is density of, ये density of state नहीं है. Yes. This is not a density of state. This is the number of state in the range k and k plus dk. So what should be the density of state? DK DK upon DK. Exactly, that is rho of k, which is our density of state. It should be gk dk divided by dk. ठीक है? आप लोग के बहुत से लोग होंगे जिनके मन में आ रहा होगा, सर ये क्या फॉर्मूला आप बता दिए, इसको यूज कैसे करेंगे? चलो समझ में तो आ गया होगा. हाउ वी विल यूज दिस? देयर विल बी सम स्टूडेंट, उनके दिमाग में आ रहा होगा, सर एनर्जी से रिलेट कर दो, क्योंकि आप लोगों ने जब भी पढ़ा होगा कुछ एनर्जी का फंक्शन आ रहा होगा के और डी के में, जीई डीई आप लोगों ने देखा होगा. सो रिलैक्स गाइस, इफ यू हैव दिस रिलेशन gk dk is equals to L upon pi dk, trust me, you can go to the energy, you can also go to the frequency. You know the reason आपको पता है कैसे? K can be related to Exactly. energy and also. If you talk about the free particles, if we talk about the free particles,
भाई फ्री पार्टिकल में एनर्जी क्या होता है, h का स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2m, यही होता है. एंड एनी टाइप ऑफ रिलेशन लाइक दिस, दैट इज E के रिलेशन और ओमेगा के रिलेशन, these all are called what, dispersion relation. इन सबको क्या बोलते हैं, dispersion relation. ठीक है, एक एग्जांपल दे, एग्जांपल दे, अभी देखो तुरंत क्लियर होगा. ठीक है, नाउ आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ अ वन डायमेंशनल नॉन रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रॉन. बेसिकली इसी की बात कर रहा हूं. आई एम टेकिंग एन एग्जांपल. इस चौक से आपको दिख रहा है क्लियर, इस चौक से दिख रहा है आपको, दिख रहा है एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. All right. So I'm taking an example of, I'm finding here, going to find the density of a state for a one dimensional नॉन रिलेटिविस्टिक. ये जरूरी है क्योंकि रिलेटिविस्टिक केस में दूसरा होगा, वो भी हम करेंगे. नॉन रिलेटिविस्टिक डेंसिटी ऑफ स्टेट फॉर वन डायमेंशनल नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. लेट्स सॉल्व दिस. चलो इसको सॉल्व करते हैं. अभी देखना आप लोग कनेक्ट कर जाओगे कि सर इसको हम यूज कैसे करेंगे. सी what we have to find, we have to find the density of state. All right, जैसे ही डेंसिटी ऑफ स्टेट आए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, जैसे ही डेंसिटी ऑफ स्टेट का क्वेश्चन आपके सामने आए, 1D की अगर बात करें, अभी 1D की बात करें, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट द वन डायमेंशनल, कोई डिस्पर्जन रिलेशन आपको गिवन है ई के में या ओमेगा के में, आपके दिमाग में सबसे पहले कौन सा रिलेशन आना चाहिए, दिस वन. दिस इज द मास्टर इक्वेशन फॉर द 1D. जी के डी के इज L अपॉन पाई डी के. ठीक है, नाउ द थिंग इज हाउ वी विल यूज दिस. हम इसको यूज कैसे करेंगे, आई एम टेलिंग यू. क्या है, वन डायमेंशनल नॉन रिलेटिविस्टिक फ्री इलेक्ट्रॉन. इसकी एनर्जी यही होती है, E इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई 2m, राइट. p इज h कट k, दैट इज h कट स्क्वायर k स्क्वायर बाई 2m. एग्री, सब लोग एग्री कर रहे हो? ठीक है, नाउ राइट k इन टर्म्स ऑफ E. k को E के टर्म्स में लिखो, क्या होगा, k स्क्वायर इज इक्वल टू 2me बाई h कट स्क्वायर, यही होगा, राइट. एंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, अंडर रूट 2me by अंडर 2me बाई h कट. ठीक है, राइट. नाउ ठीक है, ये हमें पता चल गया. वी हैव टू फाइंड, ऑल राइट, dk की वैल्यू यहां रखनी है. वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ dk हियर. फाइंड द वैल्यू ऑफ dk फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ de एंड पुट देयर. कैसे होगा, इसको डिफरेंशिएट कर दो. इट विल बी 2k dk, 2k dk is equals to what, 2m by h कट स्क्वायर de होगा. ठीक है, नाउ द वैल्यू ऑफ dk विल बी व्हाट, m by h कट स्क्वायर k de. ठीक है, but the problem is here k is coming again, so just put the value of k again here from this. So it will be, dk will be m by h cut square, and 1 upon k value will be h cut upon under root 2me. All right, and de is here. So this is also value of dk here in terms of de. जो मोमेंटम था वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया है, राइट. सो जस्ट पुट द वैल्यू ऑफ k dk हियर. तो देखना, अब जब आप dk को de में चेंज करोगे ना, व्हेन यू विल चेंज dk इन टर्म्स ऑफ de, then correspondingly this will be also change. So it will become GE ge de. अब आप एनर्जी की बात करने लगे, ge de is equals to L upon pi. Put the value of dk from here. चलो मैं इसको इधर लिख देता हूं, अभी ये दिखेगा नहीं आप लोगों को. ge de
it will become what? L upon pi, and value of dk here is h cut से h cut 8 चला जाएगा, है ना, और अंडर रूट एम से अंडर रूट एम भी चला जाएगा, तो ये आपको क्या मिलेगा? M upon H cross E upon अरे चलो मैं पहले लिख देता हूँ, ठीक है ना, एक h कट भी चला जाएगा ना, तो यू विल गेट m बाई 2h कट स्क्वायर इन अंडर रूट, यही मिलेगा, है ना, ये मिलेगा ना, एंड e टू द पावर माइनस 1/2 de, ठीक है, दिस इज द GE DE, एंड यू हैव टू फाइंड द डेंसिटी ऑफ स्टेट, जिसको हमने रो E से लिखा था, तो आपको क्या करना है? जस्ट डिवाइडेड बाय द DE फ्रॉम हियर, and the density of state will comes out L upon pi into root under m upon 2h cut square e to the power minus 1/2. And many of you guys will be aware that yes, density of state for the one-dimensional non-relativistic electron has the dependence on energy at e to the power minus 1/2. पता होगा आप लोगों को, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ठीक है ना। और देखो आप यहां से डेंसिटी ऑफ स्टेट का ई पे डिपेंडेंस कैसा आ रहा है? रो ऑफ ई इज प्रोपोर्शनल टू ई टू द पावर माइनस 1/2। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है ना, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे ही पूछता है that the density of state is directly proportional to e to the power s. What should be the value of s? They will give you the dispersion relation. वो आपको dispersion relation दे देंगे, वो किसी एक डायमेंशन की बात कर देंगे, लेट्स सपोज 2 डायमेंशन की बात कर दिया, and they will ask find the density of state and how the density of state will depend on energy. Famous question. बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा एग्जाम में आपके आए हुए, ऑलराइट, ठीक है ना। So the crux is for the 1D, what do you have to learn? You have to learn the expression of gk dk, that is L upon pi dk. और 2D और 3D में भी हमको ऐसे ही करना है, हम पढ़ेंगे सारा, हम समझेंगे सब कुछ, but for the exam point of view, these three relation, these three means this, एक ये, एक 2 डायमेंशन का और एक 3 डायमेंशन का, वो हमारे दिमाग में होना चाहिए। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ जीके डीके? ऐसे क्वेश्चन करेंगे ना, ओमेगा भी, आप ओमेगा को भी चेंज कर सकते हो, क्या प्रॉब्लम है? ओमेगा इक्वल टू सीके होता है, if you talk about the sound wave, ओमेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के, एज आई टोल्ड यू। अब उसके लिए सॉल्व कर लो। हम अभी देखो डेंसिटी ऑफ स्टेट पे ये लास्ट लेक्चर, पहला और लास्ट लेक्चर नहीं है, आई विल डेडिकेट एटलीस्ट 2 or 3 लेक्चर ऑन द डेंसिटी ऑफ स्टेट, बिकॉज इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। और इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाता है क्योंकि इसका एक्सप्रेशन स्टूडेंट ना कुछ गड़बड़ कर देते हैं। अच्छा एक चीज और, मैं यहाँ पर एक चीज मिस कर गया हूँ कैलकुलेशन में, वो मैं आपको बता देता हूँ। व्हेन यू विल फाइंड द जीईडी, ठीक है ना, हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं ना, वी आर टॉकिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, ये मैं आपको बता दूंगा जहां जहां ऐसी चीजें आएंगी। जब भी इलेक्ट्रॉन की बात होगी ना, whenever there will be thing around for the electron, तो वहां पर आपको इस पूरे एक्सप्रेशन में ना 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। रीजन पता है सबको, किस लिए? अप एंड डाउन। यस एग्जैक्टली, डीजेनरेसी फैक्टर, ठीक है ना, क्योंकि एक इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन कितनी होती है? हाफ होती है, तो उसके लिए आपको यहाँ से बस 2 से मल्टीप्लाई कर देना होगा, बाकी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 2 आ जाएगा। एनर्जी के डिपेंडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डोंट वरी, एनर्जी के डिपेंडेंस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस एक 2 का एडिशनल फैक्टर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के केस में जिसकी स्पिन हाफ होती है, ठीक है ना, क्लियर है। सो दिस वाज आवर 1 डायमेंशनल डेंसिटी ऑफ स्टेट्स। कितना टाइम बचा है? अरे तो टाइम भी हो गया, खत्म होगा नहीं 2 डायमेंशन। सर हाँ आपने इसको मास्टर इक्वेशन बोला था ना, तो हमने तो ये हाँ हाँ, तो मतलब हर केस में यही ट्रू होगा, पर हमने यहाँ पे तो मतलब 1D बॉक्स का सिस्टम कंसिडर किया ना सर। अरे सर मैंने डिस्क्लेमर डाला ना था पहले, कांस्टेंट पोटेंशियल होना चाहिए, कांस्टेंट, जीरो इज आल्सो कांस्टेंट पोटेंशियल। बेसिकली कांस्टेंट पोटेंशियल भी भूल जाओ, बाहर से किसी फोर्स का कुछ भी लेना देना नहीं होना चाहिए उस पोटेंशियल पे, बस इतनी सी बात है। ऑब्वियसली अगर आप हार्मोनिक ऑसिलेटर की बात करते हो, हार्मोनिक ऑसिलेटर का हार्मोनिक ऑसिलेटर का केस नहीं है ये, ठीक है। हार्मोनिक ऑसिलेटर में पोटेंशियल होता है, प्रॉपर पोटेंशियल होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर,
सो हम उसको इसमें यूज नहीं कर सकते, उसका दूसरा मेथड है, वो आपके सिलेबस में नहीं है. ऑलराइट, so basically whatever effort we will made here regarding a density of state, it will be applicable only for the constant potential. Clear hai? Okay. All right, now after this class I will send you one question for the 1D case, and your homework will be to find out the density of state for that system. मैं आपको भी भेजता हूँ, ठीक है. 2D अभी स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि लेंथ दी जाएगा, खत्म नहीं होगा. सो वी विल स्टार्ट द 2 डायमेंशनल केस टुमारो ऑनवर्ड्स, ठीक है. डोंट वरी, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेंगे डीओएस पे, बिल्कुल टेंशन मत लेना. 1D 2D 3D बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है. बस जो मैं कह रहा हूं उसको ध्यान रखना, आपको इस रिलेशन को ध्यान रखना है, जीके डीके का रिलेशन, बाकी सब आप खुद ही मैथमेटिक्स कर डालोगे. ऑलराइट, ऑलराइट, ओके. सो सी यू गाइस टुमारो with the 2 dimension case. Thank you, sir. Thank you. Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir.